can call this chapter as rate of reaction, or you can even name this as speed of reaction as well. Right, this is a very simple and easy topic, and you can say that this is very much important for MCQs, theory and paper 4, all three papers. हर paper के लिए, MCQs के लिए, theory के लिए, ATP के लिए, this chapter is very much important. And for MCQs, you can say that 1 or 2 MCQs are must in the exam. हर year में आपको 1 से 2 MCQs के लाजमी मिलेंगे. Then theory के अंदर भी the factors are included over there. How can we increase the rate of reaction by temperature, pressure, and by concentration of reactants वगैरह. And then ATP में इसका एक question must होता है about rate of reaction. There will be a graph question in ATP. वो भी बड़ा आता है पेपर में ना. तो you can say that this is pretty much important chapter for you. So you must need to understand what is the rate of reaction and what is the speed of reaction means, and what is this chapter is asking for attention. Why this chapter is asking for attention. It's pretty much a smart and very easy chapter to do, right? So let's see how can we solve this chapter. So start with the speed of reaction. So what is speed of reaction? Actually, speed of reaction is how fast and how slow the reactions are, right? For suppose if we talk about like manufacturing of a road. So if you talk about the manufacturing of the road, so cement is going to take 6 to 5 hours to be like dry, and the cars are ready to drive on the road. So if you want to make a road, so at least 5 to 6 hours definitely आपको चाहिए होंगे इस reaction को complete कराने के लिए. Same as it is if you talk about like the rusting process. So rusting on iron grills or iron doors or iron windows, it will take almost 5 to 6 months to get rusted अगर आपने इसकी precaution नहीं की है तो. आज से 6 महीने लग जाते हैं, और कहीं कहीं 2-3 महीने में भी रस्टिंग हो जाती है, और कहीं कहीं उससे पहले भी हो सकती है. It's all about conditions where the moisture is greater and where is interaction of oxygen and moisture greater, तो वहां पर रस्टिंग ज्यादा हो जाती है. It's all about that. लेकिन ये भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तकरीबन 2-3-4 महीने लग जाते हैं रस्टिंग में. So it will be a time taking reaction. Same as it is if you talk about the periodic table chapter, and you remember over there when you put a sodium into the water, it will be a quick reaction. The reaction occur on the spot. उसी वक्त reaction होना शुरू हो जाता है, right? If you talk about the burning of like combustion of methane gases in your house in the cooking purpose, so you know that the reaction starts on the spot. वहीं start हो जाता है, वहीं burning होना शुरू हो जाती है. Like the burning of fuels, petrols in your cars, that would be a quick reaction, right? So we have a lot of reactions जो कि बड़े quick होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बहुत lazy होते हैं, बहुत time taking होते हैं. So we have different type of reactions, और कोई फास्ट होता है, कोई स्लो होता है. तो उसको फास्ट कैसे किया जा सकता है स्लो वाले को, या फास्ट वाले को स्लो कैसे किया जाता है. These all things that we need to do in this chapter. And how can we calculate the speed of reaction? मतलब कि ठीक है, एक बंदा भाग रहा है, वो फला स्पीड से भाग रहा है, ठीक है ना, that's not a big deal. हम उसकी स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी स्पीड से भाग रहा है. लेकिन for suppose अगर आप बात करें किसकी, अगर आप बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो आप कैसे बताएंगे यार ये रिएक्शन इतनी तेज भाग रहा है, ये रिएक्शन इतनी स्लो भाग रहा है. दैट वुड बी समथिंग बड़ा अजीब सा नहीं लगेगा हम लोगों को. हम स्पीड ऑफ रिएक्शन किस तरह फाइंड आउट करेंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्पीड. देखते हैं कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. स्पीड ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए we need to do what you need to calculate at least what you need to calculate. You need to calculate the reactant consumes, at least reactant consumed कितना हुआ है. You need to calculate this with respect to time. कितने टाइम के हिसाब से खर्च हुआ है. This is one of the method by which you can find out the rate of any reaction, or you can even find out the rate of reaction by how can you find out the rate of reaction? You can even find out the product produced. कितनी product produce हुई है with respect to time. You can even use this method as well to find out the rate of reaction. Or you can even find out the rate of reaction in this way, that the change in concentration with respect to time. Change in concentration with respect to time. You can even calculate the rate of reaction by this method as well. So there are a lot of things by which you can even find out the rate of reaction. So this is one of the, you can say that reactant consume, product produce, change in concentration, all these stuff. When you
measure all these things with respect to time, so you can find out the rate of reaction, right? So आपने ये भी याद रखना है कि अगर आपसे किसी तरह का planning type का question आ जाए, आपसे पूछ लिया जाए exam में, how can you plan a rate of reaction experiment, so you must need to keep remember these things. आपने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम करने के लिए रिएक्टेंट कंजम्पशन निकालनी होगी, या तो प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कितनी हो रही है वो निकालना होगा, या तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना होगा. विद रिस्पेक्ट टाइम यू नीड टू मेक श्योर दिस दैट you need to have some information, some, you can say that, some readings at different time intervals, and then you can find out the rate of reaction or the change of these things with respect to time. So you must need to remember these things कि यार rate of reaction किस तरह हम solve कर सकते हैं. तो rate है क्या चीज? Anything, change of anything with respect to time. अगर change of speed की बात करें, तो what is speed? It is actually the change of displacement with respect to time. है वो velocity जिसको आप लोग बोलते हो, वो क्या होता है आपके पास with respect to time, जो आपका distance change होता जा रहा है, that is what speed. इस तरह अगर आप acceleration की बात करें, what is acceleration? It is actually the change in velocity with respect to time. So rate is something when you are having anything with respect to time. So over here in rate we are having with respect to time. हम time के हिसाब से calculate करें हर चीज, तो that is why this is rate, right? Every one of you. Yes. चलें सबसे पहला मेथड की बात करते हैं. मेथड नंबर 1. If you talk about method number 1, बच्चों, so what is method number 1? How can we calculate the rate of reaction? Method number 1, that quite easier. You can find out the rate of reaction by the decrease in mass. You can find out what the rate of reaction by the decrease in mass. So let's see how can we calculate this. So for suppose we have this. This is one of the, you can say that, a conical flask I try to make, right? कुछ इस तरह का conical flask हो सकता है, right? I just try to make it. अब वो थोड़ा सा खराब हो जाए तो please don't mind this. ये मैंने conical flask बनाने की कोशिश की है. This is what conical flask, and then I have what machine weight balance over here. This is the weight balance, right? And on the weight balance we have what? A conical flask placed, right? And on the weight balance we have over here a reading column where we have to check the reading, mass changes, right? And along with that we need to make sure a cotton wool over here. We need to make a cotton wool over here. This is the cotton wool, right? So the liquid could not escape from there and only gas can escape, right? And this is what conical flask, right? And this is what digital balance, right? To measure the mass. This is digital balance, right? Okay, so for suppose, bachcho, I just take HCl over there inside the conical flask. I just take HCl inside the conical flask, right? This is HCl. And in this HCl, I am just putting some calcium carbonate over there. This is what? Calcium carbonate. So definitely we will have reaction over there. We know that what would be the reaction if we have HCl and we are adding calcium carbonate over there. So this is acid plus metal carbonate. So it will form what? Salt, carbon dioxide, and water, right, bacho? Right? Yes. Yes, sir. So we will see that when the reaction occurs, so there will be escaping of a carbon dioxide gas. You can see this, that why we are using this cotton wool, so it will allow the gas to escape, right? So you can say that it allows gas to escape, right? So there will be a change in mass as well, right? And also it could not allow liquid to escape, right? You need to keep remember the use of cotton wool over here, why we are using cotton wool. So the liquid inside will stay inside the conical flask, but the gas can escape, right? So definitely when the gas is going to be escape from here, so the mass is going to be decreased. So
until and unless the mass is going to be constant, you need to do this reaction, right? You need to keep measuring the mass of the machine or the digital balance at different times, right? आप हर एक मिनट बाद या whatever you need to make a scale on yourself, right? Have 1 minute, या 2 minute, या 5 minute, या 50 second, या 30 second, whatever you need to take a scale on your behalf, so you can do this, right? But after every that time, for suppose 30 seconds, you need to check the reading on the balance until and unless it is going to be stopped, right? Or it is going to be, you can say that, constant, right? So for suppose it is going to be constant at 0 point somewhere, yeah, whatever the mass over here, which is going to be constant, that's not a thing. You need to keep, remember, we need to do this till the constant reading, right? So you need to keep, remember, okay, keep measuring the mass and time till the mass on balance become constant, right? Then you can draw a graph for this. Then you can draw a graph for this reaction, and you need to keep, remember, for the MCQs is कि यार इस वाले, ये जो आपके पास यहाँ पर फिलहाल आपके पास जो डायग्राम बनी हुई है, इस वाली डायग्राम का ग्राफ किस तरह से होना चाहिए. You need to keep remember कि इस वाली डायग्राम का ग्राफ कैसे होगा. So let's see इसका ग्राफ कैसे होगा बच्चों. इसका ग्राफ होगा आपके पास कुछ इस तरह का. देखें, डिक्रीजिंग मास है ना, मास इज एक्चुअली डिक्रीजिंग, तो इसका ग्राफ नीचे की तरफ होगा. It will be somewhere like this कि आपके पास ये कुछ ग्राफ है. इस ग्राफ के अंदर आपने यहाँ मास होगा, mass of container right now, right? So you can say that mass of container. और mass of container का मतलब ये है कि इसमें से अगर आप चाहें तो कंटेनर का मास माइनस कर दें. अब वो आप बोलेंगे कि सर कंटेनर्स का माइनस कैसे करेंगे मास. तो आप रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले खाली कंटेनर का मास ले लें, ठीक है ना. उसके बाद आप क्या करें, मास जो सब्सटेंसेस हैं उनके साथ मास ले लें एक बार, और उसके बाद फिर इसका डिक्रीज होता रहेगा. तो आप कंटेंट का भी मास कैलकुलेट कर सकते हैं. तो फॉर सपोज स्टार्ट में यहाँ था मास समवेयर ना, इट विल बी समवेयर लाइक 100 ग्राम्स था, व्हाटएवर जो भी था, ठीक है ना. आहिस्ता 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 ये अच्छा क्या होगा, आपके पास कम होगा. कम होते 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 आपके पास एक वक्त आएगा, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट, राइट. So this is what you need to draw. You need to keep remember this is actually the graph for this method. हमेशा आपने याद रखना है कि जो decreasing mass वाला है with respect to time, over here we have time, right? उसका ग्राफ इसी तरह बनेगा, ठीक है. ठीक है बच्चों. All right, every one of you. Yes, sir. अच्छा देखें, थोड़ा सा और भी ये आपके पास होगा, बड़ा जबरदस्त सा बन सकता है. ये मैंने जो बनाया है थोड़ा सा और इसको आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से. It will be somewhere like this. कुछ इस तरह से आपके पास ये होगा, ठीक है ना. But you need to keep remember, once the line is going to be straight or horizontal, this means the reaction is over now. Straight line is showing that the reaction is over now. So over here, you can find out at this time the reaction is over. It's for suppose it is 90, it is 80, it is 70, it is 60, it is 50, 40 and 30. For suppose 30 gram पे ये reaction stop हो गया. तो अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो you can consider this is 30 gram पे reaction end हो गया. And for suppose this is first minute, second minute, third minute, fourth minute, fifth minute, sixth minute, and this is 7th minute. So you can say that at almost 6.5 minutes, the reaction is over, right? So you can even find out the time of the ending of the reaction, and you can even find out the mass at the end of the reaction like this. अब यहाँ से देख सकते हैं कि reaction end जब हुआ तो total mass कितना बचा था,
और किस वक्त आपके पास टेम्परेचर ये जो रिएक्शन था ये एंड हुआ, तो आप टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और इवन वो आपसे ग्राफ में और एचईपी में आपसे ये सवाल भी पूछ सकता है कि फॉर सपोज एट 3 मिनट, वो इस तरह आपसे पूछ सकता है जब आपके पास 3 मिनट था तो उस वक्त कितना मास बचा था, तो आप इसको इस तरह निकाल भी सकते हो, ठीक है ना। और इवन वो 60 बोलकर आप टाइम भी पूछ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें वो आपसे पूछ सकता है। तो वो पूछे इससे पहले कि हम उसको पहले खुद ही कर लेते हैं। लेट्स सी कि अगर आपके पास 1 मिनट था तो कितना रिएक्शन हुआ और उस वक्त क्या रेट था। ये दे कैन आस्क फॉर रेट एज वेल। सो दिस इज द फर्स्ट मिनट, राइट, दिस इज द सेकंड मिनट, this is the second minute, this is the third minute। देखिए मैंने ग्राफ बनाया, थोड़ा सा वेरिएशन आ सकता है क्योंकि कहीं पर कुछ ज्यादा और कहीं पर कुछ कम भी हो सकता है, बट जब आपको एग्जाम में मिलेगा सो दैट वुड बी कंप्लीटली फाइन ग्राफ, राइट। तो वहां पर आपके पास ग्राफ अच्छा भी बनेगा और बहुत एक्यूरेट भी बनेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपके पास क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन, this is the third one, this is the fourth one, this is the fifth one, this is over here the sixth one, right। इस तरह से चलें, let's find out some rates of these reactions। So let's see in the first minute बच्चों, in the first minute what happened, the change in mass is from almost 100 to ये कहाँ तक आया नीचे, you can see this, ये कम हुआ है आप पास 75 is somewhere 75 ना, so you can say that the rate number 1 is जी बेटे। सर एक चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। सर हमने कॉटन वूल क्यों रखी थी? क्या कह रहे हो? सर हमने कॉटन वूल क्यों रखी थी उसके टॉप पे, बस वो कंफ्यूजन है, बाकी तो Yes, we just put cotton wool over there so the gas can escape. When the gas is going to be escaped, the mass is going to be decreased and then we are going to form a graph, right? ओके सर, थैंक यू। ठीक है, so you can see this बच्चों that in the first minute you can see this that 25 grams per minute is the rate। You can say that in the first minute the rate number 1 was like कि आपके पास 25 grams जो है कम हुए हैं फर्स्ट रेट में, इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गया, उड़ गया, ठीक है ना। फिर अगर आप सेकंड वन वाले की बात करो बच्चों, तो सेकंड वन वाले में आप देखें, सेकंड वन वाले में कितना डिक्रीज हुआ आपके पास, दिस इज एक्चुअली द सेकंड पोर्शन, दिस इज सेकंड वन। सेकंड वाले मिनट में you have a difference of almost 15, 75 minus 60, so you can say that the rate number 2 is actually 75 minus 60 per minute, so you can say that it is 15 grams per minute। So then the second you can say that in the second minute, sorry, you can say that कि आपके पास जो rate of formation of carbon dioxide था वो कम हो गया, ठीक है ना। तो आपके पास अब 15 ग्राम रिलीज हुई है, पहले मिनट में 25 बनी थी और रिलीज हो गई थी, और सेकंड वाले में 15 बनकर रिलीज हुई है। लेट्स सी अबाउट द थर्ड वन। इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड वन, so third one is somewhere here, you can see this one, third one, just look at over here, we have 60 and now it is somewhere like ये हो सकती है आपके पास 48, 47 somewhere, so let's consider this a 48। So rate number 3 is saying that 60 minus 48 over 1 minute, so you can say that in the third minute you can see this, it is 12 gram per minute, it is further decrease, right। In the fourth minute, just see over here what's the rate in the 4 minute, just look at over there, it is saying that कि आपके पास अगर हमने इसको 48 consider किया है तो it is somewhere 39, right। So you can say that in the fourth minute, the rate of reaction will be 48 minus 39, so now it's 9 gram per minute, now it's further decreased, and then after that it is over here, okay, ये आपके पास कितना रह गया, ये 35, it is somewhere 35, so the rate number 5 is 39 minus 35 or 34 somewhere, so it will be 5 gram per minute। So what's the thing you are going to understand over here? In the first one,
if you focus over there, the rate was fastest in the start. Then after that, it is going to be decreased. The rate is continuously decreasing, right? So you can say that the rate of reaction decreases. The first thing that you need to keep remember is that the rate of reaction decreases. So why the rate of reaction decreases, bacho? If I asked you why the rate of reaction decreases, so what do you say? What's the reason behind this? You can say that, sir, the reactants are being used up. Reactants are being used up. When the reactants are going to be used up, so definitely there will be no more product going to be formed. जब ज़्यादा product बनेगी नहीं और product बनेगी नहीं, so how can the carbon dioxide gas form? और जब वो form ही नहीं होगी, तो जब form नहीं होगी, तो how can it be escape from there? So this is the thing that you need to keep remember. The rate of reaction is going to be decreases as the reactants are being used up, right? And the fastest rate is in the start of the reaction, right? You need to keep remember the fastest rate is in the start of reaction. Is that clear, every one of you? Is that clear, every one of you? Yes. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? चलें, ये सारी चीजें आप लोग अपने पास लिख सकते हो और फिर हम बात करेंगे. So if you talk about the rate of reaction second method, so you can even do this as well. बच्चों, second method क्या हो सकता है? Method number 2 is for suppose हमारे पास कोई एक conical flask है. मैं दोबारा से एक उतना ही खतरनाक conical flask बनाने जा रहा हूँ. So please don't mind this बच्चों. तो ये एक conical flask जैसी कोई स्पेशी है, ठीक है? ये conical flask, ठीक है? तो इस conical flask के अंदर जब रिएक्शन होगा, अब इस बार हमने इसके अंदर रिएक्शन कराना है डेफिनेटली उसी का HCl और अभी उसी का रिएक्शन करा रहा हूं मैं. आई एम जस्ट टेकिंग HCl इनसाइड दिस, राइट, एंड हैविंग HCl और उसके साथ मैंने इसके अंदर डालना है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा से ना. ये रिएक्शन आपको बहुत नजर आएगा रेट ऑफ रिएक्शन में, तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग दिस वन एज वेल ओवर हियर. उसके बाद मैंने इसके अंदर कनेक्ट क्या चीज करनी है बच्चों? मैंने इसके अंदर कनेक्ट करनी है गैस सिरिंज. So this is what we are going to do. क्या हम एक और तरीका क्या है हमारे पास कैलकुलेट करने का? हम यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे किससे? गैस सिरिंज से, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि और क्या चीज हो सकती है. तो देखिए बच्चों, मैंने इसको गैस सिरिंज से कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना? और कुछ इस तरह की गैस सिरिंज होती है, ठीक है? गैस सिरिंज से हमने इसको कनेक्ट कर दिया डेरिवेटिव को. तो व्हाटएवर द गैस इज गोइंग टू बी फॉर्म ओवर हियर, जो भी गैस आपके पास यहाँ बन रही होगी, इट्स द ओनली वे टू मूव for this gas is this derivative. So it will enter from here, move, and it will go from here to here, and it start collecting in the gas syringe. And we know that there are marks on the gas syringe, so it can be measured that how much gas is going to be released from here, right? And you must need to remember this, that a thing which is used over here is known as cork. देखें, एक चीज होती है जो स्टॉपर के तौर पे यूज होती है यहाँ पर. So इस conical flask में आप स्टॉपर के तौर पे एक चीज लगाते हैं जिसका नाम होता है cork. You can call this as cork or bung as well. The name of this you can call bung as well. So you need to keep remember the one which is used as a stopper over here is known as bung, right? B-U-N-G, bung, or you can call this as cork, right? This is what gas syringe. This is the only instrument to measure the gases, right? And this is what conical flask. And along with this, the very much important thing you must need to prepare is what? Stopwatch. So here we have a stopwatch. This is the digital stopwatch with us. We need to measure the time as well, right? So this will give you time as well. अच्छा, मैंने एनालॉग बना दिए, वैसे जस्ट
इस तरह की कोई स्टॉप वॉच होती है वो डिजिटल टाइम मेजर करती है, ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट स्टॉप वॉच, मैंने इसलिए इस तरह बनाई है ताकि आपको लगे कि स्टॉप वॉच है। दिस इज द सेकंड मेथड, मेथड नंबर 2, to calculate the rate of reaction. And now we are going to actually calculate what the amount of gas collect over here. So whatever the gas is going to be collect over here, it will give you like the volume over here. अब आप बोलेंगे सर वॉल्यूम कैसे आएगा, तो ये जो प्लंगर होता है आपके पास इसका या आहिस्ता आहिस्ता पीछे होगा, तो हर टाइम के हिसाब से आपने इसको मेजर करना है, ठीक है ना। अलग अलग टाइम पर ये अलग अलग प्लंगर पीछे होता जाएगा आहिस्ता 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 आहिस्ता, तो आपने इसको इस तरह मेजर करना है। एंड फॉर दिस वी नीड टू यूज ऑयल ओवर हियर इन दिस प्लंगर। तो उससे क्या होता है, ये काफी जो है स्मूथ हो जाता है और इजीली पीछे हो जाता है, गैस के थोड़े से प्रेशर से भी वो फिर पीछे हो जाता है, राइट। सो लेट्स हैव अ ग्राफ फॉर दिस। इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, नाउ व्हाट एक्चुअली वी आर डूइंग दिस, कि हम अब वॉल्यूम गैस का कलेक्ट कर रहे हैं। सो इनिशियली द गैस रेंज वाज एम्प्टी and after that it start collecting the gas, so इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। So there will be over here the volume of gas, जी बेटे। How can you pass the gas syringe into the conical flask if it's covered with the bung? Yes, the bung has a hole in it, right? bung के अंदर होल होता है, उसके अंदर से सिर्फ डिलीवरी ट्यूब जा सकती है, ठीक है। सो बच्चों ओवर हेयर इसका ग्राफ आपने याद रखना है कि इस वाले स्ट्रक्चर का ग्राफ हमेशा ऐसे बनता है। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एमसीक्यू, सो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज इसका ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ठीक है ना। इट विल बी लाइक दिस, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास ग्राफ होगा, ठीक है ना, लाइक दिस। So for suppose the final volume of the gas produced, I am considering it is what it is 10, 20, 30, 40 and the 50. The final volume of the gas over here should be 50. तो ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए इसका प्लान करना, ठीक है, यहाँ तक। फॉर सपोज ये 50 है अगर, तो यहाँ तक आपके पास इस तरह से कुछ गैस रेंज में कलेक्ट हुआ होगा। सो लेट्स सी इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन हम किस तरह निकाल सकते हैं, तो लेट्स डू दिस। फॉर सपोज ये इसको मैं लेट्स हैव अ इक्वल over here, this is for suppose this is 1 minute, for suppose this is 2 minute, 3 minute, 4 minute, 5 minute, 6 minute, ठीक है ना। So this is like a scale over here, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, right? So let's do this. So initially बच्चों this is the first minute, the amount of gas produced. This is the second minute, this is the third minute, this is the fourth minute, right? This is the fifth minute, and this is the 6th minute. You can see this at the 6th minute the reaction is over, right? So ये मैंने हमने बना लिया इस तरह, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कितना वॉल्यूम इसका फर्स्ट मिनट में बना है, सेकंड मिनट में कितना डिफरेंस आया है, थर्ड में कितना डिफरेंस आया है, फोर्थ में कितना डिफरेंस आया है, देन फिफ्थ में और सिक्स में कितना आया, राइट। दीज आर एक्चुअली व्हाट आपके पास ये 6 मिनट हो गए, ठीक है ना। द फर्स्ट मिनट इज ओवर हियर, दिस इज द फर्स्ट मिनट, राइट। सो आप देखें फर्स्ट मिनट में हमारे पास कितनी गैस प्रोड्यूस्ड हुई है। इट्स ऑलमोस्ट समवेयर लाइक इट विल बी if this is 10, so 12, 14, 16, or suppose it is 18, right? So you can say that the rate number 1 is in the first minute it is 18 centimeter cube gas which is formed per minute. एक मिनट में आपके पास 18 सेंटीमीटर गैस प्रोड्यूस हुई,
And if you talk about rate number 2, bacho, so let's see over here, the rate number 2 is saying that this is actually 30 minus 18. So you can see this 30 minus 18 is saying that you have almost 12 centimeter cube the gas which is formed. So you can say that in the second rate, the second minute is having only 12 centimeter cube of carbon dioxide or whatever the gas is going to be produced is this, right? And if you talk about the third minute, so just look at over here in the third minute, it is somewhere 38, right? So you can say that the 8 centimeter cube gas is from in the third minute, right? So the rate will be, rate number 3 will be 8 centimeter cube per minute, right? And what about the fourth one? The fourth one is also further decreased over here. Just look at over here, बच्चों कितना कम हुआ आपके पास? It is somewhere, ये कितना कम हुआ आपके पास देख सकते हैं आप लोग? It is almost 44 somewhere. So you can say that it will be, rate number 4 will be 6, or it will be, yes, just consider 6 there, 6 centimeter cube per minute. And in the rate number 5, you can see this, it will be further till 49. So it will be 4 somewhere, and then in the last it will be 2, right? So again, but you can see this, that the rate is continuously decreasing, right or not, every one of you? Yes, Yes. everyone. So you Right. can again say that the rate is decreases, right, as the reaction proceed, right? And what's the reason behind this? The only reason is as the reactants are being consumed. आपके पास जो reactants हैं वो आपके पास consumed हो गए. जब वो consume हो रहे हैं तो फिर आपके पास further product नहीं बन रही है. जब further product नहीं बन रही तो definitely आपके पास rate of reaction slow हो रहा है, बढ़ नहीं रहा. Is it right, every one of you? Yes, sir. And again, Sir, the same is the rate is the fastest in the start. Rate is fastest in the start. जी बेटे. sir, as the reactants are used up, लिख सकते हैं ना? Yes, बिल्कुल आप लिख सकते हैं. As rate of reaction is the fastest in start, right? दूसरी चीज बच्चों, आपसे पेपर में ग्राफ से बनवाएगा एटीपी में इसका, तो वो आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ मोल्स भी पूछ सकता है गैस के कितने फॉर्म हुए. सो आई थिंक यू ऑल रिमेंबर दैट मोल्स ऑफ एनी गैस कैन बी फाइंड आउट बाय द फॉर्मूला volume in centimeter cube can be divided by 24,000. So right now, what are the number of moles of carbon dioxide produced? If they ask in the exam, so you can say that it is 50, the maximum volume which is produced, divided by 24,000 will give you the number of moles of carbon dioxide produced in this reaction. And then you can find out by this equation that if 2HCl is going to react with calcium carbonate, the salt calcium chloride is going to be formed, carbon dioxide and water is going to be formed. So whatever the number of moles of carbon dioxide, the same number of moles of calcium carbonate will be formed. So I can calculate even over here that हमने कितना used up किया. Just look at over here कि आपके पास 50 centimeter cube gas produce हुई है, तो 50 divided by 24,000 will give you 0.0021 moles of carbon dioxide. So definitely it used up 0.0021 calcium carbonate. And if you want to find out the mass of calcium carbonate used up, so you can say that, sir, mass is equals to moles into mr. So definitely it will be using 0.21 grams of calcium carbonate. ठीक है ना? आपके पास calcium carbonate का 0.21 gram used हुआ है, right? And for suppose in the start you have 0.5 grams calcium carbonate, and I ask you how much calcium carbonate remains, you can say that, sir, 0.29 gram calcium carbonate is still in the beaker. So these types of questions can be asked in ATP as well. Is that clear, every one of you? Yes, sir. Any question that you want to ask? चलें, तो इसको आप अपने पास कर सकते हैं, और इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे